हेलो बच्चों, वेलकम टू बोलो फिजिक्स क्लासेस। बोलो फिजिक्स क्लासेस का स्वागत है। ड्यूअल नेचर ऑफ फ्री रेडिएशन में खाली 4 फार्मूला से है। 4 फार्मूलास में 4 मार्क्स मिल जाते हैं। देखो वो फार्मूलास क्या है। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली वेव थ्योरी, व्हाट इज दैट बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम हो जाते हैं। ठीक है, एच अपॉन रूट ओवर 2m इंटू के हो जाते बेटा, और एच अपॉन रूट ओवर 2m इंटू ई वी नॉट इन द फॉर्म ऑफ एंड पोटेंशियल में वी नॉट हो जाते। सो इन द फॉर्म ऑफ absolute temperature the wavelength of the photon is given by root over 2m into 3/2 kT हो जाता है बेटा। where k is a Boltzmann constant, t is absolute temperature, that is what h upon root over 3m into kT हो जाते हैं। ठीक है, next when a photon is instantaneous on the metal surface, it could be exerted some amount of pressure on the surface. The pressure exerted by the photon on the surface is given by P is equal to F upon A, that is equal to I upon C हो जाता है बेटा। That is F is equal to क्या हो जाता है? The force exerted by the photon on the surface, F is equal to I A upon C हो जाता है। ठीक है, the number of protons emitted per unit area is called as photon energy हो जाते हैं। The energy of the photon E is equal क्या है बेटा? E is equal to h nu, that is equal to sc by lambda, that is equal to 12,400 electron volts upon lambda in angstroms हो जाते हैं बेटा। ठीक है, next the power of the photon P is equal to n e upon t हो जाते हैं बेटा, that is equal to n e upon t, that is n into h nu upon t हो जाता है बेटा, that is n into h nu into frequency f, 1 by t is nothing but frequency हो जाता है बेटा। This is a power of a photon. Next, according to the Einstein energy equivalent equation, when a photon is incident on the metal surface, its energy can be utilized in two ways. First one is the work function of the metal, second one kinetic energy, ke हो जाता है बेटा, और पाई नॉट प्लस ई वी नॉट हो जाते, और ई इक्वल क्या हो जाता है बेटा बोलो, और एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ऑफ एम ई स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट हो जाता है बेटा। ठीक है, खाली दिस फ्रॉम दिस फॉर्मूलास वन क्वेश्चंस will be coming। वो क्वेश्चन याद रखो, 4 नंबर लेके आओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।